seamless services to manufacturers, service providers, importers and exporters. On behalf of the CBIC, I wish success to the FTP 2023 in achieving its aims. Thank you very much, sir. Thank you so much for your kind words, sir. May I now request the Commerce Secretary, sir, Shri Sunil Bartwal, sir, to address the gathering. So, Namaskar and good morning to all of you. Honorable Cabinet Minister Shri Piyush Goyal ji, Honorable Minister of State Ms. Anupriya Patel ji, DGFT Mr. Santosh Sarangi and Member Customs Mr. Rajiv Talwar, all the heads of the Export Promotion Council who are physically present as well as who are on the VC, the heads of the industry associations, my friends from media, ladies and gentlemen. So I'm very happy to see that this policy which we had promised to you 6 months back, it has come right on dot, on the right day. And DGFT has already explained the different aspects, dimensions of this policy in detail. I hope that you find some kind of comfort in this policy. As I see this policy, I see the 5 different dimensions of this policy, and I will be talking about those 5 Ds which I feel can be seen through this policy. So the first D which I see in this policy is the duration. So we have done away with that sunset clause, where every time, whether the policy is for 1 year, whether the policy is for 5 years, and after 5 years if it ends, then there was always a dilemma that should be extended by 3 months, 6 months, and there was a lot of uncertainty. So we have broken that uncertainty. We presume that our export sector is a sector where sun never sets. And therefore, we have removed this clause. Now, as DGFT was saying, that there is no end date to this. And we will be amending this policy as and when, there is a requirement. And your feedback will be taken. And in fact, you are aware that we have been holding the EPC meetings virtually every month. And perhaps that is also the reason that our exports have gone up so much, and we have been able to achieve a milestone. So this is the first D, that the duration is now, there is no end date. It will be a continuing process and it will be continuously amended. The second D in this policy is that we are living in a dynamic world, and the policies cannot be limited to a particular period. In a dynamic world, things are happening on day-to-day basis, on daily basis. The way, if you look at the way COVID erupted, the way geopolitical situations are developing, we feel that we have to dynamically address all the issues. And we have seen supply chain disruptions. We have seen, that the merchandise trade getting affected through the change in the sea routes, change in the ports, from which the merchandise exports are moving. And therefore it is a highly dynamic world. So in a dynamic world, which is based on geopolitical changes and supply chain disruptions, we have to be very, very nimble. And therefore, I feel that this policy will be able to give you that dynamism to look at the world as it exists and then address those global issues dynamically. So that is the second D, which I feel is very important aspect of this policy.
The third D of this policy is the direction. We are talking about the exports of $2 trillion by, and I think we will reach much before that, by 2030. And we are talking of not only the merchandise export but the services exports, which is growing at a very high rate, 30% rate of growth. So there is a clear direction in this policy that we have to grow and we have a larger share to catch. And as DGFT was saying, and we have been saying in various forums, that our global share in merchandise exports is hardly 1.8%. In services it is 4%, right? And given the size of the economy, we can always rise to between 7 to 10%. So what I feel that there is a clear direction that we have to grow. We have to grow our size, and even if there may be gloominess by several forecasts which are coming, we should not be afraid of that, and we should improve our pie. And in fact, let me tell you that not only we have been talking to you, we have been talking to all the embassies. We are talking to now our, the commercial attaches in the embassies, and today there is a meeting. So we are focusing, we are asking them that which are the areas where our exports can grow. So therefore, this policy gives a clear direction where our exports should grow. Secondly, the direction is also this, which Honorable Minister also mentioned several times, that we have to be globally competitive. We cannot rest on subsidies. And therefore, the PLI scheme, which is trying to bring in that manufacturing competitiveness within the country, our export should be relying on that competitiveness principles rather than on subsidy principles. So we are getting into that competitiveness mode. And we also believe that there can be a higher integration into the global value chains. So there is a clear direction which is coming out of policy that we have to move in that direction. The fourth D is decentralization, decentralized approach. In fact, 2 days we were having that G20 deliberations in the Trade and Investment Working Group. And we realized that countries like UK, they have 20% MSMEs. EU has about 40% MSMEs. India has up to 50% MSMEs. Canada has almost more than 80% MSMEs. So we have to go for inclusive growth. And for inclusive growth, the decentralization is very, very essential. And therefore you will find that we have talked about our district as export hub. Right? We have the ODOP scheme which is running very successfully, and we feel that district as export hub through the e-commerce route, and therefore you will find two very important chapters in this policy. One is e-commerce, our focus on e-commerce, so that micro enterprises, small enterprises, medium enterprises, women enterprises, there can be an inclusive growth through e-commerce, and there should be a decentralized focus. So that is the 4D, which I feel comes out very clearly out of this policy. And lastly, the 5th D, and that is again very, very important. You must have seen that chapter on rupee trade. And what we are saying, that if there are countries where there is any currency failure, or they are resorting to dollar shortage, or they are having the dollar shortages or international currency shortages, we are willing to trade in rupee with them, which will take not only the exports forward but also disaster proof those countries. So we are playing the same role which the multilateral agencies used to play earlier, and we are joining hands with them, and we are telling them that here is a country where you can open rupee trade accounts. Our exporters are willing, our importers are willing, and we can take this rupee trade forward. We are also focusing on the strength of our rupee payment system and our digital payment systems. You must have seen that huge amount of remittances are now coming through our digital payment mechanisms. So we are saying that we will disaster proof you. We will disaster proof these countries.
wherever they are facing problems. But our exports should not suffer. So we will push our exports even if it is rupee trade, even if they are facing currency issues. So I think I must congratulate DGFT that they have done an excellent job. In fact, for last 6 months, we have been doing discussions with all of you, with the industry bodies, and we wanted to, make it as close as possible to your aspirations and your requirements. And since, this is not a document which cannot be further amended, it is not a straitjacket kind of a document. It will be amended as per your requirements, as per the needs, as per the new schemes which the government will be announcing. So therefore, I am very happy that we have been able to bring out this policy which is dynamic, which has a clear direction, which is disaster proofing other countries, which is dynamic, which is looking at the dynamic world, and which is clearly duration free. So with these words, I thank all of you for making this policy document getting, released today, and I look forward to cooperation and coordination working with you together, and I'm very sure that in the coming days we will be making our exports and our export policy such that it is really able to help the whole country to grow. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your inspiring words and the continuous guidance that you have provided in the entire process. May I now request the Honorable Minister of State for Commerce and Industry, Ms. Anupriya Patel ji, to address the gathering. A very good morning, Honorable Commerce and Industry Minister, Shri Piyush Goyal ji, Commerce Secretary, Shri Sunil Barthwal, Member Customs, Shri Rajiv Talwar, IMDG Foreign Trade, Shri Sarangi, Heads of Export Promotion Councils were here today, Heads of our trade bodies, and all our distinguished guests and participants who are connected with us today for this very, very important occasion, both physically and virtually, and media. My greetings to all of you who are here today with us on this very momentous occasion as we launch the new and the much awaited Foreign Trade Policy 2023. My dear friends, we all know the existing FTP for the year 2015-2020, which was to end on the 31st of March 2020, was extended on account of COVID pandemic and also the various volatile geopolitical situations. However, the policy did contribute to an illustrious export performance of $676 billion of overall exports in the financial year 2021-22. And also this year we are all set to exceed the overall exports for $760 billion, and it's all because of you. So I congratulate you once again for doing so well and making India proud. And we always hope that you will make the best use of the policies that the government brings from time to time and continue to contribute to the growth of the nation. Friends, the new FTP announced today aims to bring stability, continuity, and also policy certainty for our exporters and importers who face various challenges on the global front. India has witnessed decades of policy uncertainty which has impacted its economic performance, and which is why it is very essential to have a policy which is, yes, dynamic, responding to the changing situations, which has a clear direction, which is open to amendments as and when required, and which provides a policy certainty to our exporters and importers today, and thereby allows for enhancing the growth potential of the country.
The new FTP, as we have seen in the course of the presentation, lays a lot of emphasis on areas of greater trade facilitation, export promotion, and also the areas that have needed utmost attention to be able to make India's foreign trade more competitive, whether it is engaging more with the states and districts and developing district as export hubs, or the area of e-commerce or streamlining SCOMET, or the amnesty scheme. So there are a host of factors which have been paid a lot of attention to. In all sense, the FTP 2023 is forward-looking. It is a policy which actually aims to be transformative rather than being disruptive. And it will respond dynamically to the emerging situations. We heard many of our speakers saying that we didn't wait for 5 years to make any changes which were required by exporters on account of the global challenges they face. We continue to do it, and which is why there is a change that you see from the earlier stance of having a 5-year FTP and then waiting for 5 years to announce a new policy. So now it is in a new shape, a new form, with a new approach, that whenever you need, you come with your suggestions, we'll keep taking your feedback, and the Ministry of Commerce constantly interacts with you and understands how you're performing, what are the challenges you're facing, and any time you need any changes, amendments, or subsequent revisions, we are open to it. So this is a policy, my dear friends, wherein we have tried our best to accommodate your expectations, your aspirations, and we are still open. So if you feel that there is something which has not been addressed, we are here to assure you that we will be addressing it as and when required. So let's welcome the new FTP with an open heart and make the best use of it. My dear friends, I would like to say, today we are in a very important period of time. This is Amrit Kal, as the Honorable Prime Minister of India calls it. We've completed 75 years of India's independence, and the next 25 years are very crucial. You remember the Honorable Prime Minister talk about the 5 pledges, the 5 vows, the Panch Pran. And one such pledge is to be able to transition India from being a developing country to a developed nation. And there is nothing that can restrain our exporters and 140 crore Indian citizens from moving towards this transition. Exports are the fundamental drivers of our economy. And you all have always made the country proud. And it is reflected in the export figures that we achieved, 760, we are going to cross. All credit goes to you, and we have to work collectively. This Amrit Kal is a golden opportunity, and we must make best use of it, and the FTP 2023 is here for you to make the best use of it and to able to further promote India's exports. I must say that today the world looks at India with a great deal of optimism. The global community wants to engage with India more and more. And India is being seen as a bright spot. India is being seen as a destination where aspirations are met. You saw the presentation, you're aware of the IMF projections. India's growth is projected to be double the world growth. This is no mean achievement, ladies and gentlemen. So this is time for us to gear up more. I know you're already doing a lot of hard work, but we have no reasons to sit back. We have to be more enthusiastic, make use of this opportunity. Government has taken several measures from time to time in terms of concluding our FTAs or promoting ease of doing business, a lot of such things, so that our exporters gain access to global markets, better integrated in the global value chains. You're able to contribute more, and your share in both merchandise exports as well as the services exports increase. So let us all pledge to work towards this bigger target of making India a developed nation and make the best use of and welcome this new FTP which is being announced today. And I assure you, with time, if you have more suggestions, we will keep accommodating our exporter friends, and we will continue to support you and facilitate you. Congratulations.
once again, and thank you so much for being here and encouraging us all. We have to be collective in our approach to take the country forward and march ahead to create a developed nation. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for your profound and encouraging words. It really means a lot to us. Now I would request the Honorable Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles, Shri Piyush Goyal ji, to address the gathering. Srimati Anupriya Patel, Minister of State, Commerce and Industry, Shri Sunil Barthwal ji, Vanijya Sachiv, Shri Talwar, Member CBIC, Shri Santosh Sarangi, Director General Foreign Trade. नाम बदलना पड़ेगा जल्दी, टाइम हो गया उसका भी। ये कॉलोनियल माइंडसेट निकालना ही है ना। सभी यहाँ हम सबके बीच उपस्थित वरिष्ठ उद्योग और वाणिज्य जगत से जुड़े हुए मित्रों, मीडिया के मित्रों, हमारे साथ हाइब्रिड भी कई लोग जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। भाई और बहनों, वर्ष का अंतिम दिन है। कई वर्षों से चर्चा चल रही थी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आनी चाहिए, जो अलग अलग निर्णय लिए उसको फॉर्मलाइज किया जाए पॉलिसी के माध्यम से। इस बार 2 या 3 वर्ष के बाद पॉलिसी आ रही है, कोविड और ये यूक्रेन सिचुएशन के कारण, लेकिन अच्छी नई चीजें इसमें जुड़ी हैं जिससे आगे के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहे। और जो आपने गत वर्षों में देखा होगा, इस सरकार में काम करने के ढंग में लचीलापन है, किस तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर सके समस्याओं को, या जो परिस्थितियां पैदा होती हैं उसको हम किस प्रकार से समय समय पे उसके हिसाब से बदलाव भी कर सके। As they say, nothing is constant in life, or the only thing constant is change, and I think that's what my previous speakers all alluded to. वैसे जब तलवार साहब बोल रहे थे, मुझे ध्यान आया एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, और थोड़ा गूगल करके निकाल भी लिया कि ये विलियम शेक्सपियर की हैमलेट प्ले में इस्तेमाल किया गया था। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। और मैं तलवार साहब को कह रहा था कि आप इतना ब्रीफली बोले कि एक प्रकार से रेवेन्यू का जो अप्रोच रहता है कि कम शब्दों में कैसे ज्यादा चीजें कन्वे कर देना, उसका भी परिचय हमको सबको मिला। आप सबको ध्यान होगा 6 अगस्त 2021 एक प्रकार से मैं समझता हूं सुनहरे अक्षरों में लिखा गया वो दिन, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संबोधन किया। कई हमारे मित्रों से चर्चा की जो मिशंस में थे, इंडस्ट्री कैप्टन्स के साथ बातचीत की, और शायद उस दिन जो भारत के उद्योग जगत की सोच है निर्यात के बारे में, उसमें एक अलग अध्याय लिखा गया। एक नई तरीके से सोचने का हम सबने मिलके निर्णय लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था, मैं कोट करना चाहूंगा, कंसिडरिंग द साइज ऑफ आवर इकोनॉमी and our potential, manufacturing and service industry base, there is a huge potential for exports to grow. At a time when the country is on the
Atmanirbhar Bharat mission, one of its goals is also to increase India's share in the global supply chain and in exports manyfold. उन्होंने प्रधानमंत्री जी कभी छोटा लक्ष्य तो रखते ही नहीं है. उनकी जो सोच है वो ऑलवेज बड़ी छलांग लगाने की सोच रहती है. मैंने भी कई बार अधिकारियों से भी बात करते हुए, आप लोग से भी बात करते हुए विषय रखा है. इट इज बेटर टू एम हाई एंड मिस देन टू एम लो एंड टू हिट. एंड ऑफ कोर्स व्हाट कैन बी बेटर देन टू एम हाई एंड अचीव इट. और आप सबको धन्यवाद भी देना चाहता हूं, बधाई भी देना चाहता हूं. ये वर्ष फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इतनी सारी समस्याओं के बावजूद एक अच्छा वर्ष रहा है. मुश्किलों से गुजरते गुजरते भी हमने कल्पना की थी $750 बिलियन इस वर्ष करते हैं, तो एक अच्छा जुड़ाव हो जाता है 75वें वर्ष के साथ, आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ. फिर देखते देखते जब फरवरी आया तो लगा 750 के बदले 760 तक हम पहुंच पाएंगे. और आप सबके अथक प्रयासों से और भगवान के आशीर्वाद से मुझे लगता है हम उसको भी अब थोड़ा पार ही कर देंगे और शायद 65 या 70 तक जाने की भी संभावना आंकड़ों से दिखती है. आज का दिन बाकी है और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के भी नंबर्स थोड़े देर से आते हैं. पर इस सबको देखते हुए लगता है कि अगर हम हिम्मत करें और मिलके हिम्मत करें तो मुझे लगता है कि हम में से कोई व्यक्ति एवरेज परफॉर्मेंस वाला नहीं है. ये भी कहा जाता है ना, इट इज ऑर्डिनरी पीपल हु गिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट. हम में से किसी में भी क्षमता की कोई कमी नहीं है, काबिलियत की कोई कमी नहीं है, संभावनाओं की कोई कमी नहीं है. हमको अपना मन में ठान लेना है, मन बना लेना है. मन बनाना है कि हमको कहां जहां भी अपॉर्चुनिटी दिखे किसी को भी छोड़ना नहीं है. हर प्रकार से एक निर्यात का विस्तार हो, अलग अलग देशों में हो, अलग अलग क्षेत्र में हो. स्वाभाविक रूप से जहां हमारी कंपेटिटिव एडवांटेज है वहीं पे हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे. जैसा कॉमर्स सेक्रेटरी ने भी कहा और मेरे बारे में तो शायद आप सब अच्छी तरह अभी समझ ही गए कि उस सब्सिडीज और क्लचेस के भरोसे तो मैं मानता ही नहीं हूं कि कोई भी इंडस्ट्री अथवा कोई भी काम सफल हो सकता है. मेरा मानना है हमारी क्षमता बलबूता पे ही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा. जैसे मोटरसाइकिल को एक किक स्टार्ट करते हैं, वो मैंने तो चलाई नहीं है कभी मोटरसाइकिल या स्कूटर, पर किक स्टार्ट जैसे देते हैं, जस्ट गिव अ किक स्टार्ट, देन इट गोज एंड देन वी हैव टू चूज कि हमको हमारा बजाज की स्पीड पे चलना है कि हार्ली डेविडसन और नॉर्टन की स्पीड पे चलना है. और मुझे लगता है कि आप सबको तो आज के आधुनिक युग में सभी को और आपके अगली पीढ़ी को स्वाभाविक रूप से तेज गति से आगे बढ़ने का शौक भी है और शक्ति भी है. और आगे आने वाले दिनों में अवश्य जो एक्सपोर्ट की कल्पना है वो इस देश में बदलेगी. जिस प्रकार से हमारी सोच बदली है वैसा ही आंकड़े भी बदलेंगे. मैं कुछ डिटेल्स निकाल रहा था. पिछले 10 वर्ष में एक्सपोर्ट्स अभी अभी निकलवाए हैं किसी को भेज के. जब डीजीएफटी प्रेजेंटेशन दे रहे थे तो मुझे ध्यान में आया कि इसमें और एक रहस्य भी छुपा हुआ है और ये आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं कि आपको और प्रोत्साहन देने के लिए. अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन बना ही लिया था अगस्त 2021 में जब आप सबके समक्ष आए थे, हम आजादी के अमृत वर्ष में प्रवेश करने जा रहे थे 15 तारीख को. 15 अगस्त 2021 से हमने आजादी का अमृत महोत्सव मनाना शुरू किया.
उनका मन तो शायद बन ही गया होगा कि भारत को अब विकसित देश बनाना है, वी हैव टू मेक इंडिया डेवलप नेशन। उसी के हिसाब से उन्होंने हम सबको मार्गदर्शन भी दिया। और उनको ये पीड़ा थी कि कई वर्षों से हमारा जो निर्यात है वो लगभग फ्लैट चल रहा था। मैंने 2010 से 20 लगभग 10 वर्ष के जब निर्यात के आंकड़े देखे तो एक रेंज बाउंड आंकड़े थे, बहुत ज्यादा छलांग कभी नहीं लगी। ज्यादा से ज्यादा जो हाईएस्ट गया था वो 2017-18 में $499 बिलियन और 18-19 में $538 बिलियन। दैट वाज द हाईएस्ट नंबर वी हैड अचीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज मिला के। उसमें भी स्प्लिट अप चाहिए तो 18-19 में $330 बिलियन गुड्स था और 208 सर्विस। उन्नीस 20 में भी लगभग फ्लैट रहा। उस वर्ष फरवरी मार्च में कोविड की समस्याएं सामने आने लगी थी, तो आप लोगों ने मुझे समझा बुझा दिया कि भाई मार्च में हमारे आंकड़े कम हो गए, फरवरी मार्च में तो 538 से घट के 527 हो गया, $527 बिलियन। और उसके बाद कोविड का वर्ष आया, उसमें फिर घट के 498। तो लगभग जहां से शुरू हुई थी कहानी वहीं पे आके हम खड़े हो गए, 499 to 498 और 3। तब प्रधानमंत्री जी ने हम सबको संबोधित किया। ये मैं इससे याद दिला रहा हूं, ओनली फॉर ईच वन ऑफ अस टू रिफ्लेक्ट कि हम में क्षमता तो ऑलवेज थी। मुझे लगता है नीडेड द प्राइम मिनिस्टर टू कम एंड पंप अप आवर एनर्जीज एंड आवर एंथुजियाज्म। और देखिए उसके बाद क्या परिवर्तन आया। आपने आंकड़े तो देखे ही, 2021 में 498 या 500 के आसपास पकड़े तो 500 से 676 बड़ा छलांग हुआ। थोड़ा बहुत पोस्ट कोविड पेंट अप डिमांड का भी लाभ हुआ। और सब मुझे बोलने लगे कि अब जरा ज्यादा टारगेट मत रखना, यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो गया था 1 साल पहले। सब में थोड़ी एक आत्मविश्वास में कमी दिख रही थी। और मैंने कई फोरम्स पे, और शक्तिवेल शायद एक व्यक्ति थे हमारे फियो के चेयरमैन जिनका आत्मविश्वास कभी कम नहीं होता था, जो पूरे जोश से हिम्मत से कहते थे कि नहीं हम 750 तो पक्का पार करेंगे और दोनों में हम ग्रो करेंगे, मर्चेंडाइज में भी और सर्विसेज में। एंड आई एक्नॉलेज एंड थैंक यू शक्तिवेल जी फॉर योर लीडरशिप ऑफ आवर सेक्टर। और आप सबके प्रयासों से इस वर्ष 750 तो पार हुआ, शायद 760 भी पार होगा, यानी 13-14% ग्रोथ एग्रीगेट में। किसको ऐसा ना लगे कि हमने कुछ छुपाने की कोशिश की है, तो ये भी कह दूं कि गुड्स में भी अच्छा ग्रोथ है आज की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए। सर्विसेज में तो बहुत बड़ी छलांग होने के आंकड़े दिख रहे हैं। और जो मैंने दूसरा एक चार्ट रखा था मेरे सामने, जब प्रधानमंत्री जी ने 6 अगस्त को हम सबको संबोधन किया तो हमने एक रोड मैप बनाया था जिसके बारे में मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं कि $1 ट्रिलियन गुड्स और $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट्स हम 2030 तक करेंगे। याद है ना? ये तो कोई भूलना नहीं भाई करेंगे। उस समय एग्रीगेट इस वर्ष का 772 बिलियन एक्सपेक्टेशन, और मेरा मानना है हम लगभग उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जब तक फाइनल आंकड़े सब SEZ, EOUs, सर्विसेज सबके आंकड़े आएंगे। मे बी गुड्स में थोड़ा कम रहेगा, सर्विसेज में थोड़ा अधिक रहेगा, इंटर से थोड़ा बदलाव दिख रहे हैं। पर जो 2 साल पहले, लगभग 19 महीने पहले बनाया था टारगेट, हम उस दिशा में ठीक चल रहे। ये मैं आपका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शेयर कर रहा हूं। और उसी के हिसाब से आगे के आंकड़े भी हम सब ने मीट करने, और
यहाँ पे अधिकांश जो मित्र बैठे हैं वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्टर्स हैं, इससे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमको गुड्स में थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि 2030 आते आते सर्विसेज के 1 ट्रिलियन के भी आगे पार चले जाए और आप पीछे रह जाए। 2 ट्रिलियन तो हम कर देंगे 2030 तक, उतना तो मेरा आत्मविश्वास पक्का है। पर मैं चाहूंगा कि आप सब भी थोड़ा और विचार करें। मैंने डिपार्टमेंट को भी कहा है कि अगले 5 महीने हमारा G20 की प्रेसिडेंसी भी है। 15 अगस्त 2023 को आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो लगभग 75 हफ्तों का एक पूरा कैंपेन था या सेलिब्रेशन था, वो भी पूरा होने आ रहा है। तो अब विभाग आप सबसे चर्चा करने वाले हैं एक मैसिव फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड आउटरीच विश्व के साथ अगले 4-5 महीने में हम मिलके करें, जिसमें भारत से सेक्टोरली अथवा कंट्री वाइज, मल्टी इंडस्ट्री कंट्री के हिसाब से या सेक्टोरली, हम छोटे बड़े ग्रुप्स में बड़े पैमाने पे लोगों को मिशंस की सहायता के साथ, और सभी मिशंस इसमें एंगेज होने वाले हैं आप सबके साथ। डॉक्टर जयशंकर ने भी इंस्ट्रक्शन दिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सभी मिशंस की जिम्मेदारी रहेगी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म, और अब इन्वेस्टमेंट को भी उसके साथ जोड़ रहे हैं। उस पर विशेष ध्यान देने की, जो इन्वेस्ट इंडिया है उसको भी हम नए रूप में, नए स्वरूप में अब पेश करने वाले हैं, जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों को एक बॉडी देखेगी, क्योंकि बोथ आर क्वाइट इंटरकनेक्टेड। जब ट्रेड होगा उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट आने की संभावनाएं भी बढ़ेगी, कोर मैन्युफैक्चरिंग और एट द ग्राउंड। और मुझे लगता है जिस प्रकार से हमने इवॉल्व किया है भारत की इंडस्ट्री को, तो जैसे एक जमाने का बजाज और आज का आधुनिक बजाज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जो पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होती है, ये जो बदलाव भारत की इंडस्ट्री में आया, कहाँ फिएट कार बनती थी और आज हमारी गाड़ियां बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होती है। संभावना है कि लगभग 1 मिलियन कार्स तक हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। ऐसे जब संभावनाओं से भरा हुआ हमारा देश है, हर क्षेत्र में संभावना है। एग्री एक्सपोर्ट्स आपने देखे कैसे प्रगति कर रहे, उसमें मरीन की पोटेंशियल बहुत बड़ी है। ऐसे ही सेरामिक्स हो, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हो, इंजीनियरिंग गुड्स, पर्टिकुलरली ऑटो कंपोनेंट्स, उसमें स्टील बहुत अच्छा कर रही है। सर्विसेज का तो जितनी तारीफ करें उतनी कम है, पोटेंशियल भी आगे अच्छा है। तो मुझे लगता है हम सब अगर मिलके इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे काम करते हैं, और नवरात्रि अभी भी हमने सेलिब्रेट किया है, कल रामनवमी भी हुई है, तो मुझे लगता है कि हम सब ने मिलके ये ठान लेना चाहिए आज कि अब भारत और भारत का उद्योग, भारत का व्यापार, भारत का सेवा क्षेत्र अब हार्ली डेविडसन को भी पार करने के लिए तैयार हो गया। इस आशा, अपेक्षा और आकांक्षा के साथ मैं आप सबको पुनः एक बार एक अच्छा वर्ष आप सबके नेतृत्व में हुआ, आप सबके काबिलियत से, आप सबकी मेहनत से हुआ। और इतना ही कहूँगा अंत में कि हम जब यहाँ से आज उठें तो ये सोच के उठें, जो प्रधानमंत्री जी ने भी शायद 15 अगस्त को ही कहा था, यही समय है, सही समय। दिस इज इंडियाज मोमेंट, लेट्स नॉट लूज इट। ऐसा ना हो कि आज से 1 वर्ष बाद हम फिर मिले 31 तारीख को, और तब
आप लोग कहें कि काश मैंने शुरुआत 31 मार्च 2023 को की होती तो शायद मैं और आगे जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. We are extremely grateful for your visionary leadership and insightful words. To conclude the event, I would now like to invite Shri S.C. Agrawal, sir, Additional DGFT, to present the vote of thanks. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Department of Commerce, I would like to thank Sri Piyush Goyal ji, Honorable Minister for Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles for his valuable time for launching Foreign Trade Policy 2023. Sir, your vision of export promotion through enhanced partnership with the stakeholders and trade facilitation through automation and simplification has been our guiding light in the making of this FTP. With new emerging areas like e-commerce and districts as exports hub in focus, we are confident to exploit their true potential for increasing our exports. I would also like to express my sincere thanks to Madam Anupriya Patel ji, Honorable Minister of State for Commerce and Industry, for gracing us with her presence. Your words of encouragement have inspired us to strive even more to realize the full potential for our trade and especially exports in this Amrit Kal. I would like to especially thank Sri Sunil Barthwal ji, Commerce Secretary, for his guidance in setting the FTP. My sincere thanks to Sri Rajiv Talwar ji, Member Customs CBIC, for being an integral part of this event. We work in close coordination with Customs as they implement the policy at Customs borders. A big thank you to export promotion councils and trade associations for immensely contributing in making this FTP a reality. Your participation and support have been invaluable, and we hope to continue our fruitful partnership in the future. I would also like to thank our friends from print and electronic media for their coverage of this event. Your support is essential in disseminating the policy not only to various stakeholders but also to people at large. Last but not the least, I would like to thank officers of Commerce and DGFT who have worked hard in various capacity to organize this event and make it successful. Their tireless efforts have made this event possible, and we are grateful for their hard work. My special thanks to Anjali, our young officer trainee, for conducting this event. Our young officers will be instrumental in shaping our future endeavors. Thank you all, sirs, and ladies and gentlemen, kindly join us for high tea. सबको उतार दें क्या? उतार दूं सबके? सबको उतार दूं? पकड़ो पकड़ो, किस किस का है?